Okay, Atul bhai, you can start. The meeting is being live streamed. Yes, Atul રેવા bhai, લોજ please start. રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત મરાઠી ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના પ્રવચન શ્રી અરવિંદો ઘોષનું સ્મરણના વક્તા શ્રી નંદકુમાર રાઉતજી, શ્રી રમેશ ડોલિયાજી તેમજ સુશ્રી રંજનબેન વૈદ્ય તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Ji. I think Ani Payasam, please search if he is there. No, sir. He is not joined now. Okay. So I think I will go ahead with Ramesh ji. हमें गुजराती में उसका भावार्थ बताइए और उसके बाद भी अगर वो नहीं आए तो रंजन बहन हम हिंदी में बोलेंगे, फिर वो इंग्लिश में. रमेश डोलिया जी, आपको एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. आप बाय प्रोफेशन ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और उन्होंने LIC को ऑफ इंडिया को एज ए डिविजनल मैनेजर काफी सालों तक सर्विस दी है. सन 2000 में वो रिटायर हुए और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने 2010 में अहमदाबाद लॉज से ज्वाइन की. अभी वो अहमदाबाद लॉज के प्रेसिडेंट हैं और वे काफी सारा सेवा का कार्य करते हैं. जो कि ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है उसमें काफी सारे लेक्चर्स देने चाहते हैं और वेरियस एसोसिएशन इस तरह के जो सेवाभावी हैं पूरे गुजरात में, उसमें भी वहाँ पर लेक्चर्स और अन्य तरह की सेवाओं का योगदान देते हैं. और वे पूरे भारतवर्ष में इस मिशन को चलाए हुए हैं कि आई डोनेशन एक बहुत अच्छा कार्य है, तो ये करना चाहिए. तो रमेश जी, आप प्लीज आज का विषय बताइए. थैंक यू. थैंक यू सर. मैं सुनाई देता हूँ बराबर? एकदम क्लियर. हाँ जी. क्लियर. हाँ, तो આજના પ્રવચનને હું ગુજરાતીમાં રજૂ કરું છું. શ્રી અરવિંદો ઘોષનું સ્મરણ. શ્રી અરવિંદો ઘોષને ગુજરાતમાં અને ગુજરાતીમાં સામાન્ય રીતે મહર્ષિ અરવિંદ તરીકે વધારે જાણીતા છે, એટલે આજે હું એમને શ્રી અરવિંદ તરીકે જ ઉચ્ચાર કરીશ. શ્રી અરવિંદ ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રથમ અભ્યાસ કરનારાઓમાંના એક હતા. તેઓ કવિ, વિચારક, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, યોગી અને આધ્યાત્મિક ગુરુ હતા. તેમનો જન્મ 15 ઓગસ્ટ 1872ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળમાં કલકત્તામાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ શ્રી કેડી ઘોષ અને માતાનું નામ સ્વર્ણલતા દેવી હતું. તેમના પત્નીનું નામ શ્રીમતી મૃણાલિની દેવી હતું. તેમના પિતા તેમનો ઉછેર યુરોપિયન સ્ટાઇલમાં થાય તેવું ઈચ્છતા હતા. આથી તેમને દાર્જિલિંગની લોર્ડ્સ કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ફક્ત 7 વર્ષની ઉંમરે જ તેમને અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા મોકલી દેવાયા હતા અને તેઓએ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં કર્યો હતો. તે સાથે તેઓએ ઘણી વિદેશી ભાષાઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો, જેવી કે ગ્રીક, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, જર્મન, લેટિન, સ્પેનિશ વગેરે.
સને 1892 તેઓ ભારત પરત ફર્યા. 15 ઓગસ્ટની વિશિષ્ટતા જોઈએ તો તે જ તારીખે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે સમાધિ લીધી હતી અને ભારતની આઝાદીનો પણ એ જ દિવસ છે. મહર્ષિ અરવિંદ તારીખ 15 ઓગસ્ટનું એક આધ્યાત્મિક મહત્વ સમજાવે છે. આપણે જે રાજકીય મહત્વ છે પણ એનું એક આધ્યાત્મિક મહત્વ બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે. 15 ઓગસ્ટના દિવસે વર્જિન મેરીનું અવતરણ ગણાય છે. એટલે કે તે દિવસે ભૌતિક શરીરનું દૈવી રૂપાંતર થાય છે. જીસસ એક માણસના પુત્ર હતા, પણ તે સાથે તે ઈશ્વરના પણ સંતાન હતા. શ્રી અરવિંદે તેમના એક શિષ્યને લખ્યું છે કે જેવો હું ભારતની ધરતી પર પગ રાખ્યો કે મુંબઈ એપોલો મંદિરે ઉતર્યો કે તરત મને આધ્યાત્મિક અનુભવો થવા લાગ્યા. અને જાણે કે એ બધા અનુભવો આ વિશ્વમાંથી નહીં થઈ રહ્યા હોય એવું લાગતું હતું, પરંતુ આંતરિક અને અનંત અસરવાળા હતા. જાણે કે આકાશમાં ઉડી રહ્યા હોઈએ અને એવી લાગણી થતી કે જાણે અનંત ભૌતિક અવકાશ છે ને તેમાં બધા જ ભૌતિક પદાર્થો અને શરીરો સમાઈ રહ્યા છે. અને આ સાથે જ મેં મારી જાતને ભૌતિક વિશ્વમાંથી બહારની દુનિયામાં દાખલ થઈ રહ્યો છું તેવું અનુભવ્યું. તેઓએ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા પાસ કરી હતી, પરંતુ બ્રિટિશ સરકાર સાથે કામ કરવા માંગતા ન હતા. આથી તે સર્વિસમાં જોડાયા નહીં. પરંતુ 1893માં બરોડા સ્ટેટ સર્વિસ સ્વીકારી 13 વર્ષ કામ કર્યું ને બરોડા સ્ટેટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સુધી એમણે પ્રગતિ કરી. તેઓએ ત્યારે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો, વેદોનો પણ અભ્યાસ કર્યો, ઉપનિષદોનો પણ અભ્યાસ કર્યો ને તે મરાઠી, ગુજરાતી અને તેમની પોતાની ભાષા બંગાળીનો પણ એમણે અભ્યાસ કર્યો. 1901માં તેઓ મૃણાલિની દેવી બાસુ સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા. 1905 થી 1912 દરમિયાન બંગાળના ભાગલા વખતે તેઓ રાષ્ટ્રવાદીઓની ટોળીના નાયક હતા. ત્યારબાદ તેઓ સ્વદેશી બંગાળી સમાચાર પત્ર વંદે માતરમના પણ તંત્રી હતા. 1908માં તેમને જેલમાં રાખવામાં આવ્યા ને 2 વર્ષ પછી બ્રિટિશ ઇન્ડિયા છોડી ફ્રેન્ચ કોલોની પોન્ડિચેરીમાં નિવાસ કર્યો, જે આજે પુડુચેરી તરીકે ઓળખાય છે. એમની સંસ્થાના સંદર્ભમાં એમની ઘણી વખત ધરપકડો થઈ અને છેલ્લે તો દેશદ્રોહના ગુના નીચે અલીપોર કોન્સ્પિરસી કેસમાં ખટલો ચાલેલ. તેઓને એકલાને જ ગુનેગાર સાબિત કરવા માટે બ્રિટિશ સત્તા વિરુદ્ધના લખાણો માટે તેમને કોઈ પુરાવો ન હતો ત્યારે તેમને મુખ્ય સાક્ષી નરેન્દ્રનાથના ખૂન થઈ ગયું, આથી છોડી દેવા પડ્યા. જેલવાસ દરમિયાન તેમને ગહન રહસ્યમય અને આધ્યાત્મિક અનુભવો થયા. તે પછી તે રાજકારણ છોડી આધ્યાત્મ તરફ વળી પોંડિચેરી આવી ગયા. મહર્ષિ અરવિંદ ઘણા સમયથી યોગની ઊંડી સાધનામાં હતા, પણ રાજકારણના ભારે દબાણને કારણે પ્રાણાયામ ને બીજી ક્રિયાઓ માટે જોઈતો સમય ફાળવી શકતા ન હતા. તેમને પોતાને લાગ્યું કે સાધના લગભગ અટકી જ ગઈ છે અને આ સાધનાને ફરીથી જીવંત કરવી જોઈએ એવું વિચારીને તેમણે શ્રી બરીનનો સંપર્ક કર્યો. જે કોઈ વ્યક્તિ એટલે બરીન સાહેબ જે બતાવે કે એવી કોઈ વ્યક્તિ કે જે એમને આમાંથી કોઈ માર્ગ બતાવે અને એ એમનો યોગનો સમય પાછળ ચાલુ કરી શકે. મિસ્ટર બરીન પહેલા મહારાષ્ટ્રીયન યોગી શ્રી વિષ્ણુ ભાસ્કર લેલેને મળ્યા હતા અને તેમનાથી અંજાયા હતા. આથી તેમણે શ્રી લેલેજીને ટેલિગ્રામ કરી ગ્વાલિયરથી વડોદરા આવવા જણાવ્યું. યોગી શ્રી લેલેજીને લાગ્યું કે કોઈ મહાન હસ્તી તેની મદદ માગે છે યોગ માટે, એમ વિચારી તાત્કાલિક વડોદરા આવ્યા. યોગી લેલેજીની શરત હતી કે શ્રી અરવિંદે થોડા દિવસ માટે બીજી બધી રાજકીય હલચલ બંધ કરી દેવી અને આ શરત એમણે માન્ય રાખવી પડી અને રાખી. મહર્ષિ અરવિંદજી આ માટે જાદવજીનું ઘર છોડી
યોગી શ્રી લેલે સાથે એક જૂના મિત્ર સરદાર મજુમદારના ઘરે આવ્યા. ઉપરના માળે એક નાના રૂમમાં શ્રી લેલેજી સાથે એમણે શરૂઆત કરી અને એ સમયે જે કંઈ બન્યું તે કલ્પનાતીત અને એવું ભવ્ય હતું કે જેને આધ્યાત્મિક જગતમાં જોટો મળવો મુશ્કેલ છે, એવો અનુભવ હતો. આપણે એ પણ જોઈએ. હવે લેલેજીએ શ્રી અરવિંદજીને કઈ રીતે કહ્યું એમાં એ જણાવે છે કે શ્રી લેલેજીએ શ્રી અરવિંદને કહ્યું, ધ્યાનમાં બેસો, વિચારો નહીં પણ મન સામે જોયા કરો. ત્યાં બહારથી વિચારો આવતા દેખાશે, પણ તે દાખલ થાય તે પહેલા એને દૂર ફેંકી. જ્યાં સુધી તમારું મન પૂર્ણ શાંત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જાતનો પ્રયત્ન કરો. સામાન્ય રીતે આવો પ્રયત્ન કરાવવામાં ઘણા મને તો વર્ષો સુધી નીકળી જાય, પણ આપણે શ્રી અરવિંદજીને કઈ રીતે અનુભવ થયો એ પણ જોઈએ. ત્યાં સુધી પૂર્ણ મન શાંત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ પ્રયોગ કરવાનું હતું. તો શ્રી અરવિંદે આ પહેલા કદી વિચારેલ જ નહીં કે મનમાં વિચારો બહારથી આવે છે, કારણ કે એ તો એમના માટે એક નવી વાત હતી કે બહારથી વિચારો ક્યાંથી આવે, તો આપણા મનમાં જ ઉભા થાય છે, તો બહારથી વિચારો તો કહેવાય જ નહીં. છતાંય એમને આગળ વધવું હતું એટલે કોઈ પ્રશ્નો કર્યા નહીં અથવા કરી શક્યા નહીં ને બેસીને જે કંઈક કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે એમણે શરૂઆત કરી. પણ થોડીક ક્ષણોમાં જ તેમનું મન કોઈ પણ જાતની હવાની હલચલ વિનાના ઊંચા પર્વત જેવું બની ગયું અને તેમણે બહારથી આવી રહેલ વિચારોને બહારથી એક પછી એક આવતા જોયા અને તે મનમાં દાખલ થાય તે પહેલા તેમણે હટાવી દીધા. હવે આ જાતની પ્રેક્ટિસ તો કેટલા બધા સમય પછી લાગે એ એમને આ જાત થઈ, અને એ હટાવવા એ પણ એક બહુ અઘરી વસ્તુ હતી. પણ તે એમ કહેવાય છે કે 3 દિવસની પ્રેક્ટિસમાં તે એકદમ તૈયાર થઈ ગયા. શ્રી અરવિંદજી કહે છે કે તે ક્ષણથી તેમનું માનસિક અસ્તિત્વ એવું બન્યું, તેમાં મુક્ત જ્ઞાન અને વૈશ્વિક મન હોય એવું લાગ્યું. વળી આ વ્યક્તિગત વિચારોથી મુક્ત હોય ને શક્તિશાળી હોય, જે દ્રશ્ય વિશ્વને વિચાર વિશ્વમાંથી કોને આવવા દેવા વિચારોને અને કોને ન આવવા દેવા એ ચૂંટી શકાય, આ પણ એમના માટે એક નવી ઉપલબ્ધિ હતી. આ ઉપલબ્ધિ માટે તેમણે ફક્ત એટલું જ કહ્યું, આ ફક્ત દૈવી આશીર્વાદનો પ્રભાવ હતો. શ્રી અરવિંદે તેમના સોનેટ નિર્વાણમાં આ અનુભવનું વર્ણન કર્યું છે, જેનાથી આપણે તેમના અનુભવનો, લાગણીઓનો, દ્રશ્યને અનુભવના સંદર્ભમાં સમજી શકીએ. શ્રી અરવિંદના અનુભવો પ્રચંડ શક્તિશાળી અને જાગૃતતાના અદ્ભુત આયામો વાળા હતા. શ્રી લેલેજીને માટે પણ આ જાતની પ્રગતિ એક આશ્ચર્યજનક હતી, કારણ કે તેમની એવી ધારણા જ ન હતી કે આટલા ટૂંકા સમયમાં કોઈ વ્યક્તિ આ વસ્તુ આટલી સુંદર રીતે અને સરળતાથી પચાવી શકે. અને શ્રી અરવિંદજી માટે પણ આ અંધાર્યો અનુભવ હતો. આ અનુભવની પ્રાપ્તિ પણ શ્રી અરવિંદ માટે રાજકારણ પણ છતાંય છોડી દેવાની ફરજ પાડતી ન હતી. તેમને રાજકીય કાર્યકરોને દોરવા પુના, મુંબઈ ને બીજા સ્થળોએથી આમંત્રણ મળતા જ રહેતા હતા. હવે આ મારો પહેલો ભાગ પૂરો થાય ત્યારે કેજો. હા સાહેબ. Two minutes to sum up. તમારો પહેલો ભાગ થઈ ગયો એ તો થઈ ગયો, પતી ગયો છે. ओके राहुल जी आप आ गए हैं? राहुल हाँ जी, सर, हेलो। हाँ वीडियो चालू कीजिए ना. हाँ, 1 मिनट। थैंक यू रमेश भाई. 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मैं रंजन जी को ले लूं पहले. हाँ आ गए आप आ गए. हाँ। आइए, कहाँ गए?
राहुल जी, मैं रंजन जी को बोलने देता हूँ, तब तक आप पक्का कर लीजिए। रंजन जी, आपका स्वागत है। एक छोटा सा आपका अल्प परिचय देना चाहूंगा। आदरणीय रंजन वैद्य जी स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने कार्य किया है और ट्रेनर के रूप में भी कार्यशील रही हैं। भारत या और साथ साथ मॉरिशस में भी उन्होंने लेक्चर दिए हैं और उनके रिसर्च पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़े गए हैं। संस्कृत भाषा की भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। थिएटर में उन्होंने बहुत नाटक किए हैं, अवार्ड्स जीते हैं। टीवी एंकर भी रही हैं, आर्टिस्ट रही हैं, डांस डायरेक्टर रही हैं। कई नृत्यों का उन्होंने निर्देशन किया है और कई बार बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में वो थियोसॉफी को का प्रोपोगेशन करने के लिए एक ट्यूब चैनल उन्होंने क्रिएट है और वो चल रहा है, जिसे उन्होंने अमृतम नाम दिया है। और वे उसके वर्णन में ये कहती हैं कि वो नेक्टर ऑफ लाइफ है और उनके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस भी उसमें कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो अवश्य जाइए। और ध्यान के लिए उन्होंने लगभग 10,000 विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। और जैन मुनि जो है अमिताभ अबू की 8 पुस्तकों में गुजराती और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और बहुत सारे उनके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे एक प्रोजेक्शन उनका शायद छप चुका है अब या छपने वाला है, वो आप हमें बाद में बताइएगा, कि मेरे 50 साल की आध्यात्मिक पढ़ाई। तो बहुत बढ़िया बात है। और आपसे हम हमेशा अच्छी बातें स्पीच के बाद भी सुनते हैं, तो आज भी हम आतुर रहेंगे, स्पेशली श्री अरविंदो पर। प्लीज गो अहेड इन हिंदी। शुक्रिया। मेरे बारे में 2 शब्द ऐसे बोलने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है इस उम्र में भी। नहीं नहीं, आपने जो किया है वो तो हमें बताने पर गर्व महसूस होता है। थैंक यू। आज महर्षि अरविंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने लिखा है कि माई लाइफ इज नॉट टू बी सीन ऑन सरफेस ऑन माई सेल्फ। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मेरा जीवन है वो सरफेस पे देखने वाला जीवन नहीं है, अति गंभीर ऐसा जीवन है। मैं सबसे पहले तो राउत जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी डिटेल में श्री अरविंद के बारे में प्रस्तुति की है। वो रियली इट इज प्रेजवर्दी। तो वो तो इंग्लैंड में अभ्यास किया, वन ऑफ देम, तो उन्होंने इंग्लैंड में अभ्यास किया, इसमें से वो कवि, विचारक, स्वतंत्र सेनानी, योगी और आध्यात्मिक नेता थे। हम तो मानते हैं कि वो लियोनार्डो दा विंसी के रीइंकार्नेशन है। उनके साथ शेक्सपियर वगैरह भी जो जुड़े गए हैं, सब साधक। इनमें से हमें पता है कि कौन शेक्सपियर है, कोई अर्जुन है, कोई भीम है, कोई युधिष्ठिर है, सब उनके साथ जुड़े हुए थे साधना में। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उनको भारतीय संस्कृति से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 7 साल की उम्र में उन्हें लोरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग में भेज दिया। वहां पता नहीं कि अरविंद को एक डार्कनेस का अनुभव होता था। वो तब निकला जब वो अपोलो बंदर पहुंचे, भारत आए तब। तो उनको दार्जिलिंग कॉन्वेंट के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा गया और रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह उनसे इतने प्रभावित थे, क्योंकि जब भी कविता के गोल्ड मेडल मिलना सकता तो वो सभी श्री अरविंद को ही मिलते थे। उनको ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, लैटिन और स्पेनिश का अभ्यास करने का वहाँ अनुभव हुआ। उन्होंने मिजलिस के जरिए, वहाँ मिजलिस का जरिए था, इसके जरिए उन्होंने स्वातंत्र संग्राम में प्रवेश किया, जो उनके पिता की इच्छा से विरुद्ध था। उन्होंने जब अपोलो बंदर में पांव रखे तो गहन शांति का अनुभव हुआ। उनकी पूरी जो इंडिविजुअल चेतना थी, व्यक्तिगत चेतना थी, उसे विस्तृत करने का एक मौका मिला।
पता नहीं इतनी विस्तृत हुई कि वो वैश्विक चेतना के साथ जैसे जुड़ गए। इतना सुंदर अनुभव उन्होंने अपोलो बंदर पे हुआ। इवन माता जी को भी, जो उनकी कोलेबोरेटर थी मीरा अल्फोंसो, उन्होंने भी जब 100 मीटर दूर थी भारत से, तभी उन्होंने भी ऐसा ही अनुभव भारत की चेतना का हुआ था। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा तो पास की, पर ब्रिटिश सल्तनत में वो इनकी सेवा करना नहीं चाहते थे, इसलिए घुड़सवारी की लास्ट एग्जाम में जानबूझ के वो फेल हो गए, निष्फल हो गए। और जब हमारे सयाजीराव गायकवाड़ गए वहां, तो उन्होंने बड़ौदा आने के लिए उनको आमंत्रण दिया, और फिर बड़ौदा के वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे सयाजीराव जी के, और अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, और वाइस प्रिंसिपल रहे। और इनका जो प्रधान था वो ये था कि उन्होंने कन्हैयालाल मुंशी जैसे स्टूडेंट भी उनके पास पढ़ते ही इतने बड़े, इतने महान हुए। फिर बंग की चळवळ, बंग की हुई, कैंपेन हुई, तो 1905 में, तो 13 साल तो बड़ौदा रहे वो, जहाँ उन्होंने सभी भाषाएं, बंगाली से लेकर सभी भाषाएं सीखी। संस्कृत के लिए कोई किसी के पास उन्होंने मदद नहीं मांगी, संस्कृत खुद सीखी, और इसके परिणाम ये हुआ कि हमें सीक्रेट ऑफ वेदा मिला। हमें वेद रहस्य का किताब इसलिए मिला कि हमें उन्होंने संस्कृत अपने आप सीखी थी। तो फिर बंग की जो कैंपेन हुई, रिवॉल्यूशन हुई, इसकी वजह से वो कोलकाता गए और वहाँ नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड, वंदे मातरम जैसे प्रकाशनों ने उनको ब्रिटिश सरकार का शत्रु बना दिया। किंतु भारत के जन समुदाय में उन्होंने क्रांति की आग जगा दी। उनको अलीपुर जेल में भेजा गया, जहां श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से काफी मार्गदर्शन पाया। अलीपुर जेल में 10 बाई 10 की एक छोटी सी कैबिन थी, वहां उनको रहना था। खाना भी यहाँ, पीना भी यहाँ, सोना भी यहाँ, टॉयलेट भी वहाँ, और लेटरिन भी वहाँ। और वहाँ जो रेड आंट्स होती है ना, जो रेड आंट्स उनके पूरे शरीर पे घूमती रहती थी। तो शुरू में तो नेचुरली हमें भी पता है, एक छोटा सा भी ये झटका लगे तो क्या लगता है, वो उन्होंने टॉलरेट किया, बेयर किया। इसकी वजह से उनको एक्सटेसी क्या होती है, परम आनंद क्या होता है, ऐसी यातना में भी इसका अनुभव हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने तो वहां उनको आके बोला था, मंदिर गढ़ो, मंदिर गढ़ो, मंदिर गढ़ो। मंदिर कौन सा? भारत माता का। और उन्होंने जो भारत माता के लिए उनको उन्होंने देश, पर्वत वगैरह का देश नहीं, वो साधारण चेतना नहीं, असाधारण माँ दुर्गा की चेतना की वजह से जैसा लगा। उन्होंने बहुत सुंदर दुर्गा स्तोत्र माँ भारती के लिए लिखा। जेल में थे, फिर जब उनको जाना था, कोर्ट में आना जाना होता था, तो सभी चपरासी, वृक्ष, सिपाही, जज, सभी में ब्रह्म का दर्शन हुआ। जैसे गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सब जगह पे उनको वासुदेव का दर्शन हुआ। जब उन्होंने कृष्ण को पूछा कि भाई मुझे तो ये देश को आजादी करना है, इसके लिए मुझे काम करना है, कृष्ण ने कहा कि वो सब तो हो रहा है और होने वाला ही है, तुम्हें किसी और वजह से यहाँ भेजा गया है, और वो वजह क्या थी वो हम बाद में देखेंगे। उन्होंने पहले मंदिर में तो कभी जाते ही नहीं थे, योग में दिलचस्पी नहीं थी, पर 2-3 ऐसे अनुभव हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब बारी उसका छोटा भाई उनका वो बीमार हुआ, तो एक नागा साधु आया, उन्होंने बोला पानी दे दो। बाउल में पानी दिया और एक नाइफ लेके
उन्होंने ऐसा ऐसा क्रॉस किया, कोई मंत्र बोले और बारी अच्छा हो गया। तब से श्री अरविंद को थोड़ा लगा कि ये इसमें कुछ है। फिर जब वो सयाजी राव के साथ में काला घोड़ा यहाँ पे सर्कल है वहां से जाते थे, तो उनमें से एक पूरी ब्लैक प्रतिमा बाहर निकल गई और एक्सीडेंट से वो लोग बच गए। और तीसरा अनुभव हुआ कर्नाली में माँ काली का मंदिर है, महाकाली का बहुत सुंदर ऐसी मूर्ति है। उन्होंने देखा कि महाकाली वो फ्लैश एंड ब्लड, वो स्टोन की मूर्ति नहीं थी, और उन्होंने स्टोन बॉडीज करके कविता लिखी और महाकाली का वह साक्षात्कार हुआ। उसके बाद में उनका योगमय प्रवेश बिल्कुल इजी हो गया। बारिन ने सजेस्ट किया, राउत जी ने कहा है ऐसा, बारिन ने उनको महर्षि लेले से संपर्क करवाया, ग्वालियर से वो वहां आए। महर्षि लेले जिन्होंने 30 साल तक गिरनार में साधना की थी, तो वहां वो आए और उन्होंने बोला कि तुम ऐसा बैठ जाओ। आज भी वहां जो स्विंग है जहाँ पे उनको निर्वाण का अनुभव हुआ है, बड़ौदा में है। तो उन्होंने बोला जो भी विचार आए वो सब बाहर से आए हैं, ऐसा ऐसा होने दो। सचिन ने क्वेश्चन नहीं किया, he just followed महर्षि लेले एंड within 3 days, 3 दिन में ही उनकी निर्वाण की उनको अनुभूति हुई, जो उन्होंने अपने निर्वाण सोनेट में उनका डिस्क्रिप्शन किया है। अरविंद लिखते हैं कि अगर आज की जो मानवता है सिर्फ ये अनुभव क्या है, कहाँ तक उनकी सीमाएं है, वो सब जान ले तो वो दौड़ के ये साधना में लग जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। एनीवे, उसी क्षण जब वो निर्वाण की अनुभूति हुई तब मानसिक अस्तित्व से उनको मुक्त हो गई उनकी बुद्धिमत्ता। वैश्विक मन में उनका परिवर्तन हुआ और तब से बृहद ऐसा दृष्टि साम्राज्य और विचार साम्राज्य से उन्होंने विस्तृत ज्ञान को प्राप्त किया। And he writes in Savitri, all the genius they received inspiration from above only. According to their capacity, they manifest it. और उनकी कैपेसिटी के लिए जो भी हायर है वो उनका पब्लिसिटी एक हायर जीनियस की तरह से होगा, जो सामान्य है वो सामान्य इंट्यूशन प्राप्त करेगा, और वो सब होता है उद्भव में। उन्होंने अपनी अनुभूति प्रस्तुत की। इतना ही नहीं, पर जब अलीपुर जेल से उनको बाहर निकाला गया और उत्तरपाड़ा में व्याख्यान देना था, तो महर्षि लेले को बोला कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ ये सभा को नमस्कार करो, सिर्फ ये सभा नारायण है ऐसा करके आप बोलना शुरू करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेक्चर्स वी हैव एट उत्तरपाड़ा व्याख्यान। इसे मुझे 6 साल की उम्र में मुझे उनका प्राइज मिला था, उत्तरपाड़ा व्याख्यान। उन्होंने पुणे, बॉम्बे, सूरत जैसे कई जगह पे स्वातंत्र की आग जगाते हुए प्रवचन किए, और उनके व्याख्यान के पूर्व महर्षि लेले की सूचना के अनुसार जो भी बाकी सब मूल स्रोत से प्राप्त होना था वो होने लगा। और इसके साथ शायद मेरा समय भी समाप्त होता है, तो अस्तु, आभार। थैंक यू सो मच। और राउत जी आप आ गए हैं? हाँ, राउत जी आ गए। वाह। तो यस बस आपका एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ और आप फिर शुरू करिए। यस सर, पार्ट 1, यस पार्ट 1। उसके बाद आप चाहें तो कंटिन्यूस पार्ट 2 भी कर दीजिए, ताकि उसके बाद फिर लाइन से हम आए। है ना? जस्ट गिव मी 1 मिनट। राउत जी शायद अपने घर के बजाय कहीं और जाकर आज कर रहे हैं। हाँ, पड़ोस में आया। मोबाइल से नेट वगैरह कनेक्ट नहीं यहाँ हो। पर नेट है, हमारे घर में नेट नहीं है। हाँ, वही मैंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम हो गया। मैंने हेल्प की कुमार राउत फटाफट। जी हमारे नियमित वक्ताओं में से हैं त्रिवेणी के, और विशेषकर जब किसी महान विभूति या महान पुरुष या महान
व्यक्ति के बारे में कुछ कहना रहता है तो ये कहीं ना कहीं से पूरी हिस्ट्री ढूंढ लाते हैं। उनका एजुकेशन है बी सिविल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से किया है उन्होंने, और वे रिटायर्ड हुए सर्विस में 2015 में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से। उसके बाद टीएस मेंबरशिप ली उन्होंने, और अकोला लॉज के ही से ही उन्होंने शुरू किया एज अ ट्रेजरर। फिर प्रेसिडेंट बने अकोला लॉज के 2016 से 2019 तक। मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी वे प्रेसिडेंट रहे हैं, और नेशनल लेक्चरर तो हैं ही। आइए सर, त्रिवेणी में अपना व्यक्तित्व शुरू कीजिए, और मेरे ख्याल से पार्ट 1 खत्म हो तो आप खाली कह दीजिएगा कि पार्ट 1 खत्म हुआ, ताकि Yes, yes. दूसरे वक्ताओं को क्यों मिल जाए कि पार्ट 2 यहाँ Yes. से। थैंक यू सर, Yes, sir. प्लीज गो अहेड। Okay, sir. Thank you. Good evening, everyone. Today's our topic for speech is the remembrance of Aurobindo Ghosh, because today is the Mahasamadhi day, and our respected brother Taralji has selected such a good topic. So I must thank him. So let us see first part. Shri Aurobindo, he was one of the first Indian educated in England. He was a poet, thinker, freedom fighter, yogi, and spiritual leader. He was born on 15th August 1872 at 4:30 a.m. at Calcutta in West Bengal. His father's name was Dr. K.D. Ghosh, and mother's name was Swarnalata Devi. His wife was Mrinalini Devi. His parents wanted to give his upbringing in European style, so they enrolled him in the Loreto Convent School at Darjeeling. At the age of 7, he was sent to England to complete his studies. He did his schooling from King's College, Cambridge, and also he had learned various foreign languages like Greek, French, Latin, Italian, German, etc., and Spanish also. In 1892, he came back to India. It is said that there is a similarity of date, 15th August. Ram Krishna Paramahamsa had also his Mahasamadhi on 15th August. This was also the day ordained to be the day of Indian independence. Shri Aurobindo has explained its spiritual significance. The 15th August is the day of the Assumption of the Virgin Mary. It implies that the physical nature is raised. Physical nature is raised to the divine nature. The Virgin Mary refers to nature. Jesus is the divine soul born in man. He is the Son of God as well as the Son of Man. He wrote to one of his disciples that since I set foot on the Indian soil on the Apollo Bandar in Bombay, I began to have spiritual experiences. But these were not from this world, but had an inner and infinite bearing on it, such as feeling of the infinite pervading material, space, and the immanent inhabiting material objects and bodies. At the same time, I found myself entering superphysical world plane with influences and an effect from them upon the material plane. He passed the Indian Civil Service examination, but he didn't want to work for the British government, so he didn't join. But in 1893,
he accepted an appointment in the Baroda State Service. There he worked for 13 years and rose to the post of principal of Baroda State College. He learned Sanskrit, read the Vedas, the Upanishads, epics, Marathi, Gujarati, and his native language Bengali also. In 1901, he married Mrulanini Basu. During the partition of the Bengal, that is 1905 to 1912, he led the group of nationalists. Later, he became the editor of a nationalist Bengal newspaper named Vande Matram. He was also imprisoned in 1908, and 1 year later he fled British India and found a refuge in the French colony of Pondicherry. Now it is Puducherry. The story about this is he was arrested in the aftermath of a number of bombings linked to his organization in a public trial where he faced charges of treason for Alipur conspiracy. However, Sri Aurobindo could only be convicted and imprisoned for writing articles against the British colonial rule of India. He was released from prison when no evidence could be provided, following the murder of a prosecution witness, Narendranath Goswami, during the trial. During his stay in jail, he had mystical and spiritual experiences, after which he moved to Pondicherry, leaving politics for spiritual work. From the year 1904, Sri Aurobindo was deeply engaged in the practice of yoga, but because of the increasing pressure of political work, he did not have time for the regular practice of pranayam and other kriyas. He himself felt this progress in sadhana. It came to be a halt, and he asked Mr. Barin, there was Mr. Barin, if he knew someone who could pull him out of this situation and help him to pursue yoga more systematically than he had done earlier. Mr. Barin had met a Maharashtrian yogi, Vishnu Bhaskar Lele by name. After his extensive wandering, he had to wander here and there. Mr. Barin had to find out a suitable yogi. Mr. Barin was impressed by the yogi. With Sri Aurobindo's consent, Mr. Barin sent a telegram to Lele at Gwalior to come to Baroda. It is said that when Lele received the telegram, he felt that a great soul needed his help in yoga, and so he left at once for Baroda. It was at Khaserao Jadav's house that Lele came and meet Sri Aurobindo. Lele was ready to help, but asked that Sri Aurobindo should suspend all political activities, at least for a few days, and devote himself completely to yoga. So Sri Aurobindo left Jadav's house and went with Lele to the house of another old friend, Sardar Muzumdar. Here in a small room on the top floor, he was with Lele, and what happened then is very something unimaginable, incalculable, and at least to his knowledge, with no parallel in spiritual history. Lele said to Sri Aurobindo, sit in meditation, but do not think, look at your mind.
you will see thoughts coming into it. Before they can enter, throw these away from your mind till your mind is capable of entire silence. Sri Aurobindo had never heard before of thoughts coming visibly into the mind from outside, but he didn't think either of the questioning the truth or the possibility. He simply sat down and did it. In a moment, his mind became silent as a windless air on a high mountain summit, and then he saw one thought and another coming in a concrete way from outside. He flung them away before they could enter and take hold of the brain. And in 3 days, he was free. Sri Aurobindo said from that moment, in principle, the mental being in him became a free intelligence, a universal mind, and not limited to the narrow circle of the personal thought, but a receiver of knowledge from all the 100 realms of being and free to choose what it will in this vast sight empire and thought empire. When Sri Aurobindo was asked how he had achieved this, he answered, it was simply through the divine grace. In his sonnet, Nirvana, Sri Aurobindo had given a description of this experience, bringing its reality nearer and more clearly to our vision, understanding, and feeling. Sri Aurobindo's experience, a series of tremendously powerful experiences and radical changes of consciousness, was a surprise to Lele because he had not intended it. Indeed, Sri Aurobindo himself, the experience was a surprise. However, this overwhelming impact of this realization did not at all mean that he would give up politics. There were many invitations for Aurobindo to address meetings and to meet political workers at Pune, Bombay, and at other places. From Baroda, Sri Aurobindo went to Pune. He requested Lele to accompany him. Sri Lele accompanied him. Sri Aurobindo's mind had become calm, silent, and devoid of all thoughts, and he was not sure how he could give a speech or address meeting in that condition. He asked Lele what he should do. Lele simply told him to make namaskar to the audience and wait, and the speech would come to him from the other source, that the mind. And so, in fact, the speeches came. Indeed, in the course of only a few months, Shri Aurobindo had gone far beyond the depth of an experienced yogi like Lele. Shri Aurobindo went to Calcutta and his political activities increased. Sri Aurobindo was imprisoned in a solitary confinement cell as a under trial prisoner in the Alipur bomb case. Shri Aurobindo said, I looked at the jail that secluded me, and it was no longer by its high walls that I imprisoned. No, it was Vasudeva who surrounded me. I walked under the branches of tree in front of my cell, but it was not the tree. I knew it was Vasudeva. It was Sri Krishna whom I saw standing there and holding over me his shade. I looked at the bars of my cell, the very grating that did duty for a door, and again I saw Vasudeva. It was Narayan
who was guarding and standing sentry over me, or I lay on the coarse blanket that were given to me for couch and felt the arms of Sri Krishna around me, the arms of my friend and lover. This was the first use of the deeper vision he gave me. I looked at the prisoners in the jail, the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them, I saw Vasudeva. It was Narayan whom I found in this darkened soul and misused bodies. The trial of Alipur bomb case lasted for a year, but eventually he was acquitted on 6th of May 1909. His defense counsel was Chittaranjan Das. After this, Sri Aurobindo moved to Pondicherry on April 4th, 1910. He was then 38 years of age, and he was received by several revolutionaries at Pondicherry. So, we have completed this first chapter. Thank you. Sir, you can go ahead with the second. So, Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Now let us see this second chapter. There was one spiritual collaborator of Sri Aurobindo, Mira Alfasa. Afterwards, she came to be known as the Mother. She was a French national, born in Paris on 21st February 1878. In her young age, she studied occultism with Max Theon. Along with her husband, Paul Richard, she went to Pondicherry on 29th March 1914 and finally settled there in 1920. Shri Aurobindo considered her his spiritual equal collaborator. After 24th November 1926, when Shri Aurobindo retired into seclusion, he felt it, he left it to her plan, build and run ashram. Sometimes later, when families with children joined the ashram, she established and supervised Sri Aurobindo International Center for Education with its experiments in the field of education. She was a Jewish mystic. She was profoundly moved by their first meeting with Sri Aurobindo. In 1968, at the age of 90, she formally established Aurovillo, an experimental township dedicated to human unity and evolution, located 6 miles from Aurobindo Ashram. Aurobindo and the mother worked on the supramental force on the mind. This was the ultimate transformation, according to the Rishi. Sri Aurobindo's core philosophy is best described by A.B. Purani, one of his biographers. He said Sri Aurobindo advocates the control of matter by the spirit, but to be able to do that, man must rise above his present state of consciousness. He must rise from his mental consciousness to the truth consciousness, to the supermind. Sri Aurobindo's essential teachings state that behind the appearance of the universe, there is consciousness. Although this is united by that one self, capital S, it is separate, but it is possible to remove that veil and become aware of the true self by virtue of psychological discipline. Evolution certainly enables this, but the process does not stop here.
Life is the first step, with the next being the development of the supermind and spirit. The aim is simple, that one can discover self and not just stay there, but evolve to a higher consciousness. Mira had spiritual and occult experiences from the childhood, according to her own accounts. By the age of 13, she used to travel astrally at night in a golden robe. Through her spiritual experiences, she also saw that union with the divine and a divine life on earth was possible. In her sleep, she met many teachers, one of whom she referred to as Krishna. She recounted that between the ages of 18 and 20, she had attained a constant awareness of the divine presence. Then there is Siddhi Day. 24th November 1926 is the Siddhi Day, or the Day of Victory. Shri Aurobindo experienced the descent of Krishna into his body. He explains the descent of Krishna would mean the descent of the overmind Godhead, preparing through not itself actually bringing the descent of supermind and Ananda. Sri Aurobindo's Mahasamadhi Day is also observed. 5th December 1950 is Sri Aurobindo's, that is today, Mahasamadhi Day. The next day observed at Pondicherry is the day of supramental manifestation. 29th February 1956 is the day of the supramental manifestation. The mother has the concrete experience of descent of the supramental consciousness on earth. Then the next day is the mother's Mahasamadhi Day. Mahasamadhi Day, that is 17th November 1973. On this day, the mother leaves her body. Sri Aurobindo wrote many books like The Life Divine, Savitri, The Synthesis of Yoga, All Life is Yoga, The Supramental Manifestation on Earth, The Mother, The Problem of Rebirth, The Integral Yoga, Hidden Forces of Life, The Upanishads, The Future Evolution of Man, Secret of the Veda, etc. So many books are written. We shall see some books, what is there written. Life Divine. This book contains 1172 pages. 72 pages. This is a Aurobindo's principal philosophical work. A theory of evolution culminating in the transformation of man from a mental into a supramental being and the advent of a divine life upon earth. Behind the appearances of the universe, there is the reality of a being and consciousness, a self of all things, one and eternal. This one being and consciousness is involved here in matter. Evolution is the method by which it liberates itself, man, the highest consciousness form of life upon earth, is a key to this perfection. A transitional being, he is destined to exceed his limitations as a mental being and become a supramental being. Savitri, a legend and a symbol. Savitri is both the creator and the delight of existence. The main purpose of Sri Aurobindo's epic Savitri is to change human destiny
from the state of mortality to immortality and experience eternal Ananda. Savitri offers a vision of truth that goes beyond the ordinary mind through realms of the overmind and supramental truth. Savitri cannot be described only rationally. The life of the human and the movement of one's soul over the cosmic planes. Savitri is Sri Aurobindo's major poetic work, an epic of about 24,000 lines. Then there is book, The Integral Yoga. This book written by Sri Aurobindo contains pages 408. It is a compilation of letters written by Aurobindo to disciples during 1930. The book presents the major aspect of his spiritual teaching. The goal of integral yoga is to become aware of the divine, to integrate the physical, mental, and spiritual aspects of ourself, and to manifest the divine on earth. According to Sri Aurobindo, all life is yoga. While yoga as a sadhana is a methodized efforts toward this self-perfection, which belongs to expression of the latent hidden potentialities of being. According to Sri Aurobindo, the current status of human evolution is an intermediate stage in the evolution of being, which is on its way to the unfolding of the spirit and the self-revelation of divinity in all things. Yoga is a rapid and concentrated evolution of being, which can take effect in one lifetime, while unassisted natural evolution would take many centuries or many births. The third book is The Synthesis of Yoga. This book contains pages 1918. Sri Aurobindo's principal work on yoga. It is an examination of the traditional systems and an explanation of his own method of integral yoga. Sri Aurobindo writes at considerable length about the three great yogic paths of knowledge, work, and love, and comments more briefly on the other path, Hatha Yoga, Raj Yoga, and the Tantric Yoga. In the final part of the book, Yoga of Self-Perfection, he describes his own system of yoga, known as the integral yoga, through which his philosophy of supramental transformation and the conscious evolution could be lived in life. And finally, the transformation of man into Superman could be achieved. Now, last page is, there is another book he has written, Lights on Yoga. The way of the yoga followed here has a different purpose from others, for its aim is not only to rise out of the ordinary ignorant world consciousness into the divine consciousness, but to bring the supramental power of that divine consciousness down into the ignorance of mind, life, and body, to transfer them, to manifest the divine here and create a divine life in matter. This is an exceedingly difficult aim and difficult yoga. To many or most, it will seem impossible also. All the established forces of the ordinary ignorant world consciousness are opposed to it and deny it and try to prevent it, and the sadhak will find his own mind, life, and body full of the most obstinate impediments to its realization. In this way, on the occasion of Sri Aurobindo's Mahasamadhi today, we all remembered about his life, spiritual practice, and work for humanity, and his nirvana also.
So let us pay homage to Shri Aurobindo and the mother. Thank you. We have completed our second part also. Thanks. I will straight away request Ramesh ji that please go ahead with the second Gujarati version. Please go ahead, sir. Thank you. એનીવે અત્યારે મને જે કઈ ધ્યાનમાં આવી છે એ રીતે હું એને હાજી હાજી બતાવું છું. હાજી શ્યોર શ્યોર. હા. આપણે જોયું કે એમને મહર્ષિ અરવિંદને એ ઉપજોણ થવા માંડી કે જ્યારે હું વિચારો જ નહીં આવે તો પછી હું પ્રવચન કેવી રીતે કરીશ. એટલે એ પુના ગયા અને તેઓએ લેલેને પણ સાથે લઈ ગયા અને લેલેને પણ એ માન્ય હતું કે એમની સાથે જવું. અન્વિતજીનું માનસ ક્ષેત્ર સુષુપ્ત શાંત અને વિચાર વિહીન બની ગયું હતું. તેઓ એ પણ જાણી શકતા ન હતા કે હવે કેવી રીતે તે હાલના પ્રવચનો આપશે, મિટિંગોને ઉદ્બોધન કેવી રીતે કરશે. કારણ કે જ્યારે વિચાર જ ના હોય તો શબ્દો ક્યાંથી આવે, અને એ ના હોય તો પછી પ્રવચનો ન થાય, કઈ સમજાવવાની વાત ન સમજાવી શકાય, તો પછી તો આગળ આ પ્રવૃત્તિ ચાલશે કેવી રીતે. એક સ્ટેન્ડ જેવો એમના માઇન્ડમાં આવી ગયું. ત્યાર પછી તેઓ શ્રી લેલેજીને પૂછ્યું કે હવે શું કરવું, કારણ કે આ પરિસ્થિતિમાં તો હું મારી આ પ્રવૃત્તિ તો કરી જ નહીં શકું કે જે મારે કરવી જરૂરી છે. હવે કેવી રીતે આગળ વધવું તે બાબતમાં વિચાર જ ના હોય તો શબ્દો કેવી રીતે આવે. શ્રી લેલેજીએ તેમને એક સુંદર ઉપાય સૂચ્યો. તેમણે કહ્યું, પ્રથમ તો સભામાં જે પણ ઉપસ્થિત લોકો હોય તેમને નમસ્કાર કરજો અને એક નાના વિરામ પછી તમે જોશો કે વક્તવ્ય તમારી પાસે જ બીજી દિશામાંથી આવી રહ્યું છે. અને ખરેખર એવું બન્યું પણ ખરું. એમણે એ જ પ્રમાણે કર્યું અને ખરેખર એ પ્રવચનો કરી શક્યા અને એમને ખૂબ આનંદ થયો કે ચાલો હવે એ પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ રહેશે અને યોગાની પ્રવૃત્તિ પણ સાથે સાથે ચાલુ રહેશે. અને પછી બસ થોડા જ દિવસના અથવા તો કહો કે થોડા જ મહિનામાં તો તેઓ એવા ઉડાણ સુધી પહોંચી ગયા કે એની ધારણા પણ શ્રી લેલેજીને ન હતી. શ્રી અરવિંદ ત્યાર પછી કલકત્તા પહોંચી ગયા અને તેમની રાજકીય કાર્યવાહી એટલી બધી વધી ગઈ કે અલીપુર બોમ્બ કેસના સંદર્ભમાં તેમને એક એકાંત સ્થળમાં રાખી દેવામાં આવ્યા, કારણ કે બ્રિટિશ હુકુમત તેમને ખૂબ ગંભીર ગુનેગાર ગણતી હતી અને હજી તેમના પર કાર્યવાહી ચાલવાની હતી. અને જેલ વિશે, જે જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા એના વિશે એક બહુ સુંદર અનુભવો એમણે લખ્યા છે. અને આવા અનુભવો તો કોઈક એક તમારી દિવ્યતા તરફની પ્રગતિ હોય તો જ થઈ શકે કે તે સમયે તમને આવા વિચારો પણ આવી શકે. શ્રી અરવિંદજી કંઈક નવી જ વાત કરે છે. તેઓ કહે છે, મને એકલો છૂટો રાખી દેવામાં આવ્યો તો શું આ ઊંચી ઊંચી દિવાલોને કારણે હું બહાર ફેંકાઈ ગયો છું? નાજી ના, એ દિવાલોએ તો મને ગોંધી રાખ્યો ન હતો, કારણ કે એ તો વાસુદેવ હતા જે મારી ચારે બાજુ વીંટળાયેલા હતા. દિવાલોને એમને વાસુદેવ દેખાય છે. મારા સેલની બહાર ઉભેલા સુંદર વૃક્ષો હતા, તેની લતાઓ નીચે લબડતી હોય ત્યાંથી હું જયારે પસાર થતો ત્યારે તે વૃક્ષોની ડાળીઓ જાણે વાસુદેવ મને આલિંગન આપવા માટે ઉભા હોય એવું લાગતું હતું. મારા સેલના સળિયાઓની પાછળ પણ વાસુદેવના દર્શન થયા. અરે બહાર ઉભેલો સંતરીમાં પણ એમને નારાયણના દર્શન થયા. અને જે ધાબળો એમને આપવામાં આવ્યો હતો એ વીંટળાઈ તે ધાબળાને પણ એમ કે છે કે તેમાં પણ એવી લાગણી અનુભવી કે જાણે શ્રી કૃષ્ણ મને વીંટળાઈ વળ્યા હોય, એક ગાઢ મિત્રની માફક મને વળગી પડ્યા હોય એવું અનુભવ એમને થયો. આ એમણે આપેલું પ્રથમ ગહન દર્શન હતું. શ્રી અરવિંદે બીજા કેદીઓ સાથે જોયું કે જેમાં ચોર, ખૂની વગેરે પણ હતા,
પણ તેમની તરફ દ્રષ્ટિ કરી તો તે અંધારિયા આત્માઓમાં પણ એમણે નારાયણના દર્શન કર્યા. અલીપુર બોમ્બ કેસ લગભગ 1 વર્ષ ચાલ્યો, પણ તેમાં અંતે 6 મે 1909 દિવસે એમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા. એમના તરફણમાં લડનાર હતા શ્રી ચિત્તરંજનદાસ. આ પછી 4 એપ્રિલ 1910 રોજથી શ્રી અરવિંદ પોંડિચેરી પધાર્યા. ત્યારે તેમની ઉંમર 38 વર્ષની હતી અને તેઓ પોંડિચેરીના ઘણા ક્રાંતિકારીઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યાર પછીનો ભાગ હવે હું એમને અત્યારે જે સાંભળ્યું એના પરથી જે કંઈ મને યાદ રહી છે એના પરથી કહું છું. મીરા અલ્ફાસા ફ્રેન્ચ નેશનલ લેડી હતા. તેમને 1940માં અરવિંદ સાથે એમનો પરિચય થયો હતો અને 1926થી શ્રી અરવિંદ એકાંતવાસમાં ચાલ્યા ગયા. 1968માં ઓરોવિલોની સ્થાપના કરવામાં આવી. અરવિંદજીને માતાજીએ માનસ પરના પ્રયોગો બતાવ્યા. જાગૃતતામાં સાચી જાગૃતતા સમજાવી. જીવનમાં સુંદર મનનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું. મીરાજીને બાળપણથી જ 13ની ઉંમરથી જ અદ્ભુત અનુભવો થતા હતા. દિવ્ય જીવન વિશ્વમાં શક્ય છે તેવું તે પહેલેથી જ અનુભવતા હતા. સિદ્ધિ દિવસ આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણ તેમના દેહમાં દાખલ થયા અને ઉચ્ચતર મન અને આનંદનો અનુભવ થયો. આજે અરવિંદની મહાસમાધિ દિવસ છે. સુપ્રામેન્ટલ કોન્શિયસનેસ પૃથ્વી પરનું અવતરણ અનુભવ્યું અને 17/11/1933ના મધરે તેમનો દેહ છોડ્યો. સાવિત્રી લખ્યું, શ્રી અરવિંદજીએ સાવિત્રી લખ્યું. તેની અંદર ઉપનિષદોની સાર પણ આવી જાય છે, વેદોનો સાર પણ આવી જાય છે. આ ઉપરાંત એમણે ઘણા પુસ્તકો લખ્યા કે જેમાં આ બધી વસ્તુઓને એમણે જણાવી છે કે જેથી એ વાંચન કરીને ધારે તો વ્યક્તિ પૂર્ણતાની તરફ આગળ વધી શકે. મુખ્ય અરવિંદોની ફિલોસોફીનું વર્ષ સાવિત્રીમાં બતાવેલ છે. વચ્ચેના ગાળામાં પ્રયાસ કરવા પડે છે. સાવિત્રી સત્યનું દર્શન કરાવે છે. તેનું વર્ણન સામાન્ય સંજોગોમાં સમજાવવામાં અઘરું છે. ઇન્ટ્રિકલ યોગામાં પણ એમણે ઘણા અનુભવોનું વર્ણન છે. આધ્યાત્મિક અનુભવોનું સુંદર વર્ણન છે. પૃથ્વી પર દિવ્યતાનું વર્ણન છે. અરવિંદના મને યોગા સંપૂર્ણ બંધારણ બદલી શકે છે. સ્ટ્રેટેજીસ ઓફ યોગા ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ બતાવે છે અને તેમની પોતાના અનુભવો રાજયોગ, હઠયોગ, તાંત્રિક યોગ પણ બતાવે છે. મનુષ્યથી મહામાનવત્વનું વર્ણન બતાવે છે. જીવન ને દેહનું ઉત્કર્ષ તરફનું પ્રકરણ બતાવવામાં સફળ થયા છે. મદ્રાસ મહાસમાધિ દિવસે તેમનું નિર્વાણ આપણને યોગ તરફ પ્રયાણ કરાવે તેવી પ્રાર્થના. થેન્ક યુ. Okay. Ranjan Ben, please put on your video. Ranjan ji. Ranjan ji. I think સંભળાતું નથી. ત્યાં સુધી થોડીક વાત હું સાવિત્રી વિશે કરું. હા, કરો. સાવિત્રી એક એવો ગ્રંથ છે કે જેની અંદર લગભગ એમ કહેવાય છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યારે તમારે પ્રગતિ કરવી હોય ત્યારે જે વસ્તુઓની જરૂર છે એનું તમને સંપૂર્ણ વર્ણન આની અંદર મળી શકે છે. એ 816 પાનાનો ગ્રંથ છે અને 12 પર્વ છે. પણ એ કેટલો મોટો છે એની તમને એક વાત કરું કે કેટલી પંક્તિઓ છે એની અંદર. 23,864 પંક્તિઓ છે સાવિત્રીમાં. એટલો મોટો ગ્રંથ છે. 816 પાનાનો ગ્રંથ છે અને 365મી પંક્તિએ તો એ પેલા સત્યવાનનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. એનો અર્થ કે ત્યાર પછીનું કેટલું બધું વર્ણન પેલા એનું આવે છે. સાવિત્રીનું ટાઇટલ 24 અક્ષરોનું બનેલું છે. રમેશભાઈ, હાજી આવી ચૂક્યા છે તો હાજી તમે વાત પૂરી કરીને પછી એક હા 2 મિનિટ પૂરી કરીને
અરવિંદે સાવિત્રીનું 5 વખત પ્રૂફ રીડિંગ કર્યું હતું. તમે વિચાર કરો, આટલા મોટા પુસ્તકનું 5 વખત એમણે પ્રૂફ રીડિંગ કરેલું અને એમની કેટલીક પંક્તિઓ તો એમણે 11 વખત મઠારી હતી. એનો અર્થ કે એટલી બધી એમની અંદર પરિપક્વતા લાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે કે જેથી વાંચનારને સંપૂર્ણ પ્યોર જ્ઞાન મળે અને એ આગળ વધી શકે. થેન્ક યુ. યસ રંજનજી, તમારો સેકન્ડ પાર્ટ અનમ્યુટ કરી લેજો. अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू। उनको ऐसा आदेश मिला कि चंद्रनगर जाओ, तो वो पहले चंद्रनगर गए और बाद में पुदुचेरी गए 1904 में। उनकी अंतर चेतना की जो साधना थी, इसकी बहुत सारी सीढ़ियां थी। माइंड को उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि पहले हायर माइंड होता है, फिर इल्यूमिनेट माइंड होता है, प्रकाशित, फिर इंट्यूटिव माइंड होता है जो रामकृष्ण का, फिर ओवर माइंड होता है जो कृष्ण और सभी देव देवताओं का है, एंड फिर ओवर सुपरामेंटल जो उन्होंने खुद अपनी खोज की, जो महत ब्रह्म है, महत तत्व है। तो भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, जो महत है वो सुपरामेंटल है, उनको वे पृथ्वी पे उनका मैनिफेस्टेशन करना था, आविर्भाव करना था। तो मेरा अल्फांसो जो फ्रेंच लेडी थी, उनको 12 वर्ष की साल से ही पता नहीं किसी ने विवेकानंद का राजयोग प्रस्तुत किया था, ट्रांसलेशन अच्छा नहीं था, पर वहाँ जो कृष्ण थे वो एक्चुअली वो कृष्ण को मानती थी, वो श्री अरविंद थे और उनको मानती थी। और बाद में जो 1914 में वो यहाँ आई, इसके पहले थियोन और उनकी वाइफ के साथ बहुत सारे अकल्टिज्म के प्रयोग उन्होंने किए। इतना नहीं, सिद्धि प्राप्त की थी और संजीवनी मंत्र भी उन्होंने वहां पे प्राप्त किया था। और क्या हुआ कि 24 नवंबर को, ऐसे नवंबर में पूरे पौंडीचेरी में कुछ न कुछ इतनी चमत्कारिक अभिव्यक्तियां सब लोग अनुभव करते थे। और 24 नवंबर को शाम को सबको बुलाया गया, चलो ध्यान में आओ। और वहां कृष्ण का फिजिकल में, श्री अरविंद की फिजिकल बॉडी में उनका डिसेंट हुआ। और 1926 से श्री अरविंद रिटायरमेंट में चले गए क्योंकि उनको अपर साधना करनी थी और माता जी को आश्रम की सभी व्यवस्था करनी पड़ी। वहां से लेके आज तक 2023 में भी सिर्फ वो ही अध्यक्ष है और कोई अध्यक्ष नहीं आश्रम में। वो एक वंडरफुल फिनोमिना है। उनकी आश्रम व्यवस्था के जरिए उन्होंने श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की, जहाँ कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और मजे की बात यह है कि एक स्टूडेंट शायद थोड़ा 6 महीने तक एक सब्जेक्ट पढ़े, बाद में उसे लगे कि मुझे चेंज करना है तो वो चेंज कर दे। और दूसरी एक बात यह है कि वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, एग्जाम ऐसे ली जाती है, टेस्टिंग करना, पर जैसे बाहर सर्टिफिकेट वगैरह है ऐसा नहीं दिया। फिर भी उनके स्टूडेंट जीनियस पुरवार हुए कई क्षेत्र में। वो तो आज समय नहीं है इसके बारे में बात करने का। और माता जी ने इसमें शिक्षा में क्रांतिकारी प्रयोग से एक नया आयाम दिया। उनके जीवन कवन को प्रस्तुत करते हुए शंभुभाई पुराणी लिखते हैं, उनकी साधना आत्म तत्व के द्वारा जड़ तत्व में रूपांतरण की साधना है और इसके लिए मनुष्य को चेतना की वर्तमान अवस्था से परे सत्य चेतना में, अतिमनस चेतना में ऊर्ध्वारोहण करना पड़ेगा। विनोबा जी तो कहते हैं कि उनकी साधना कैसी है, जैसी कारंजा की कला, फाउंटेन में पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऐसी। ओशो ने भी लिखा है, ये अवतरण और आरोहण की साधना श्री अरविंद के सिवाय किसी ने नहीं बताई है। विनोबा जी लिखते हैं कि मैंने उनका लाइफ डिवाइन ग्रंथ का अभ्यास किया तो ऐसा लगा कि पूरा समुद्र मैंने पार कर दिया, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था। तो उन्होंने कुछ
30 ग्रंथ लिखे, 30 वॉल्यूम्स आते हैं। इसमें सावित्री, योग समन्वय, वेद रहस्य, उपनिषद भाष्य प्रमुख है। उन्होंने लाइफ डिवाइन में लिखा है, जो उनका फिलोसॉफिकल, एक्चुअली इट्स अ रिसर्च, इट्स अ थियरी। वहां लिखा है कि बिफोर अवर थिंकिंग, रीजनिंग, रिफ्लेक्टिंग माइंड, आज जो हम है थिंकिंग, रीजनिंग, सोचने वाले मन, बिफोर दैट देयर वाज सबकॉन्शियस और इनकॉन्शियंट। प्राणी थे, एनिमल्स थे, वनस्पति थी, जो वो सब पहले थे। देन उनके आर्गुमेंट है, आफ्टर अस देयर इज लाइकली टू बी अ ग्रेटर कॉन्शियसनेस। तो एक ऐसी, एक अति महान ऐसी चेतना आनी चाहिए, नॉट डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट, जो सोच विचार करके नहीं, ऐसे ही काम करे। और वो सुप्रामेंटल करती है। हमारा सबका, हम तो शेरविन को गुरु मानते, हमारा सबका ये अनुभव है। तो वो अपने रूम में 8 घंटे चलते रहते, यति मनस्य अवतरण के पुरुषार्थ के लिए। वहां ट्रैक बन गया। शेरविन के रूम में एक बार साइक्लोन आया, जब पूरे पौंडीचेरी में साइक्लोन आया। आज भी साइक्लोन आया है, 5 दिसंबर 23 को भी साइक्लोन है। तो माताजी ने सोचा कि उनकी तो किताबें इधर उधर है, यहाँ एक कागज, यहाँ वो कागज, वो सब इधर उधर चल गए हो। पर जब माताजी इनके रूम में गए तो साइक्लोन का एक अंश भी उनकी रूम में आ नहीं सकता था, नहीं आया था। तो नेचर पे उनका कितना प्रभाव था वो हम जान सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए 32,000 लेटर्स लिखे हैं योग के, जो लेटर्स ऑन योग नाम के 3-4 वॉल्यूम्स में प्रसिद्ध हुए हैं। प्रणाली का जो योग है हमारा, इसमें कुंडलिनी मूलाधार से लेकर सहस्त्र दल तक जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी वीकनेसेस है, हमारी जो अशुद्धियां है, वो अशुद्धियां के कारण कभी कभी विक्षिप्तता आ जाती है, पागल हो जाता है। इसलिए इस योग में हमें ऊपर से ऊर्ध्व चेतना जो शुद्धतम है उन्हें नीचे उतारना है, उनका ही डिसेंट करना है, इससे कोई अशुद्धियां बीच में नहीं आए और ऐसा कोई परिणाम हमें ना मिले। पूज्य माताजी के वार्तालाप के भी 19 ग्रंथ है, 19 वॉल्यूम्स। एक का तो अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके 13 वॉल्यूम से द मदर्स एजेंडा करते, कि जहां उन्होंने अपने 1950 अरबिंदो के जाने के बाद तो 1973 अपने सुप्रामेंटल के अनुभव का बहुत सुंदर ऐसा विवरण दिया। सावित्री के बाद में जो डोलिया भाई ने बताया वह सच है, क्योंकि अश्वपति ने साधना करके माताजी को कहा, जगदम्बा को कहा, जगदम्बा ने आशीष दिया कि एक ऐसी स्त्री आएगी कि जो पूरा जगत का परिवर्तन करेगी। तो सत्यवान, उनको पता था कि 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु है, नारद ने कहा था, फिर भी वो अड़ग रही। और 1 साल में इसने ऐसी साधना की कि यम को भी पूछना पड़ा कि तू कौन है, अगर तू कोई देवी है तो मुझे तेरा देवी स्वरूप बता। और फाइनली उन्होंने अपना देवी स्वरूप बताया और यम को जाना पड़ा। इसके बाद आता है हिरण्यगर्भ, दैट इज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रलोभन दिए कि तू यहाँ पृथ्वी पर नहीं जा, यहाँ हमारे यहाँ परम शांति है, यहाँ रह जा, तू और सत्यवान दोनों रहे। पर नहीं, उसके बाद परात्पर पर ब्रह्म ने भी उनको ऐसा ही दिया, उनको प्रलोभन दिए, बहुत सारे प्रलोभन दिए, पर सावित्री ने वो प्रलोभन नहीं स्वीकार किए। इससे उन्होंने उनको जो आशीष प्रदान किया, वो पूरी 11th बुक सावित्री की है। इसमें है, जिसमें भविष्य की मनुष्यता कैसी होगी उसका डिस्क्रिप्शन है। और सावित्री को बोलते हैं परमात्मा कि यू हैव टू बी माई स्वॉर्ड एंड माई लायर। जब जरूरत पड़े तो तुम मेरी तलवार बनोगे
और जब जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी वीणा बनोगे। ऐसा बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इज देयर इन सावित्री। 24,000 लाइन्स आते हैं। और दूसरा एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऐसा बुक है वो द सीक्रेट ऑफ वेदास। ऐसे पहले मैंने कहा कि संस्कृत उन्होंने खुद सीखा, इससे हमें ये वेद रहस्य नाम की किताब मिला। तो ऑरोविल 1968 में ऑरोविल की स्थापना हुई। ऑरोविल ऐसा राउंड एक बिल्डिंग है और इटालियन मार्बल से, और उसमें सिर्फ एक ही छिद्र है। वो छिद्र से पेरेंटल रे, जो सूर्य का किरण आता है और पूरे हॉल को प्रकाशित करता है। इमेजिन वहां जब हम ध्यान करते हैं तो एक कैसी अवस्था में हम सामान्य आदमी भी पहुंच सकते हैं। ऐसा सुपर ऐसा एक्सपेरिमेंट का माताजी और श्री अरविंद के एक्सपेरिमेंट का यहाँ परिणाम हमें उपलब्ध है। 5 सितंबर को उन्होंने देह त्याग किया, किंतु 9 दिसंबर तक 5 दिन तक उनके देह पर जो सुप्रामेंटल प्रकाश था, उनका क्रिम्सन येलो लाइट का आवरण था। तो 5 दिन तक उनको क्रिमेशन नहीं किया गया। जब वो लाइट धीरे 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 पृथ्वी में समाहित हुई, बाद में 9 दिसंबर को उनमें उनको समाधि दी गई। तो अतिमनस के अवतरण का ये उनका देह त्याग प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आज 5 सितंबर है 2023 और पदुचेरी से हमें मैसेज मिला है, माताजी का मैसेज था वो हमें मिला है कि श्री अरविंदो इज कॉन्स्टेंटली अमंग अस एंड रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज, सदा हमारे साथ है और उनको उनके प्रदर्शित भी होते हैं, वो उनका दर्शन भी होता है। रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु सी एंड हियर हिम, जो उनको देख सके और उनको सुन सके, वो आज भी उपलब्ध है श्री अरविंदो। तो इनका जो बहुत इम्पोर्टेंट सावित्री में सतत हर तीसरी चौथी 5वें पेज पे हमें मिलता है, वो है साइलेंस। साइलेंस की वजह से ही हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। माता जी तो कहती है कि सावित्री इज अ बुक फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जगत को वो रूपांतरित कर सकती है। तो सावित्री के जो लाइन्स है वो आपके सामने प्रस्तुत करके मैं शांत हो जाऊंगी। इन एब्सोल्यूट साइलेंस स्लीप्स एन एब्सोल्यूट पावर। निरपेक्ष शांति में निरपेक्ष शक्ति है। एब्सोल्यूट साइलेंस स्लीप्स एन एब्सोल्यूट पावर। अवेकिन, अगर वो जाग जाए, इट कैन ब्रेक द ट्रांस बाउंड सोल। जो आत्मा जो समाधि में है उनको भी जगा सकता है और जगा सकता है। Awaken the break transbound soul. It can make the world a vessel of spirit force. पूरे जगत को वो जो आत्म तत्व है उनका साधन बना देगा। It can make the world a vessel of spirit force, उनके फोर्स का। And fashion in the clay, हमारा जो मिट्टी का देह है, fashion in the clay, the perfect shape. And उनका जो ईश्वर का जो दर्शन है, ईश्वर की जो अनुभूति है वो ये है कि ये हर क्षेत्र में वो उनको अपने को प्रकाशित होना है, वही है एब्सोल्यूट साइलेंस का परिणाम। तो आज हमें थोड़ी सी उनके बारे में बात करनी हुई मिली। राउत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से। और अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। नंदकुमार जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू सर। आप सभी वक्ताओं ने बहुत ही शानदार आज का जो ये हमारा Can I speak 1 minute? याद में हमने ये विशेष त्रिवेणी मीट रखी थी, उसमें बहुत ही सुंदर रहा। रंजन जी आपने कुछ ऐड किया है, रमेश जी आपने किया है, नंदकुमार जी या कोई भी तीनों में से वक्ता में से कोई ऐड करना चाहता हो तो क्या ऐड करें। बाकी फिर उदय जी ने हाथ ऊंचा किया है तो
उन्हें भी बोलने देंगे उसके बाद। और कोई भी कुछ कहना चाहता हो, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हो, कोई विषय से ऊपर ऐड करना चाहता हो तो कर सकता है। थैंक यू। Shall I tell? Lakshmi Ma is speaking. बोलिए बोलिए, आपका वीडियो ऑन कीजिए ना। Nandakumar ji spoke so nicely, and Madam also in Hindi very nicely. Of course, I couldn't understand Gujarati, but one point I understand. That is, after listening to Nandakumar ji, you see, again to spiritualize the matter, he came back. So that is the essence of the masters also. However high we go, we have to come to the lower place to divinize or spiritualize the matter, or divinize the matter. That I liked very much, and very nicely explained the minute details also, super mental, higher mental, all the planes. So thank you very much, and you both gave so nicely all the things. थैंक यू लक्ष्मी जी। और आपने अभी अपना वीडियो ऑन किया, लेकिन हाँ नंदकुमार जी आप बोल दीजिए। तरल जी, ऐड कीजिए सर, बोलिए। हाँ, मुझे कहना है बात, ऐड करना है थोड़ा। प्लीज करिए सर। हाँ, कि अरविंद जी ने, हम जो थियोसॉफी में जिनको महात्मा कुथुमी बोलते हैं, उन महात्माओं पर, उन महात्माओं के उनको दर्शन भी हुए थे, और उन्होंने उनके ऊपर एक पोएम भी लिखी है बहुत बड़ी। अरे वाह। हाँ, यस। और कहते हैं हमारे गुरु, यानी हमारे जो लॉज के पुराने जो ये थे प्रेसिडेंट, बहुत उम्र के थे वो, ही यूज्ड टू गो टू पांडिचेरी एवरी ईयर, एवरी नाउ एंड देन, एवरी ईयर। बहुत साल पहले उन्होंने एक बात कही थी कि जब अरविंद घोष जब जेल में थे अलीपुर के, तो ही यूज्ड टू डू योग साधना। तो उन योग साधना के दौरान ये महात्मा कुथुमी ये अपीयर होते थे और उनको गाइड भी करते थे। उन्होंने ऐसा कहा था हमारे से ये बात। तो फिर महात्मा अरविंद घोष बाद में जब वो जेल से बाहर आए, तो उसके बाद वो हिमालय में गए। उन्होंने वो महात्माओं का दर्शन किया कुतुमी का, और उनको कहा कि मुझे आपका शिष्य बनाओ। तो महात्मा KH ने कहा कि आपको हमारा शिष्य बनाना हमको बहुत आनंद होगा, लेकिन यू हैव अनदर मिशन, यू गो टू पांडिचेरी। फिर उसके बाद ही वो पांडिचेरी गए। अच्छा, ऐसा हमको कहा था उन्होंने। वो हमारे बहुत पुराने थे। कोई और इस बारे में कुछ लाइक? हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, मैं सावित्री के बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि उसमें अश्वपति का पात्र बताते हैं, मगर ऐसा कहा जाता है कि अश्वपति के पात्र से श्री अरविंद जी ने अपने ही अनुभव बताने का प्रयास किया है। इसलिए कई लोग वो समझते हैं कि ये तो अश्वपति की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक माताजी ने जो सावित्री के बारे में कहा है, वो भी एक कह रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे चढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी जो सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसके बोलते हैं एक सब स्टेप आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए सब स्टेप सावित्री में मिल जाएंगे, ऐसा माता जी का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके हर एक प्रश्नों का जवाब, अंगत हो या सार्वजनिक हो, सबका जवाब आपको सावित्री में मिल जाएगा। थैंक यू जी। उदय कुमार जी आप बोलिए सर। उदय भाई। खूब खूब आभार तीनों वक्ताओं का। महर्षि अरविंद घोष की पुण्यतिथि पर आज नंदकुमार जी, रमेश भाई डोलिया और रंजन भाई वैद्य ने बहुत अच्छी तरह से अरविंद घोष का स्मरण कराया। खासतौर पर फिलोसॉफी में जैसा बेसेंट ने सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं की, यहाँ की स्वातंत्र सेना की चरवड़ में वो जुड़े और उठाका उनकी जेल में गए, तो ऐसा ही महर्षि अरविंद का था। वो भी स्वातंत्र सेनानी थे,
और आजादी की लड़ाई में जुड़े और वो अलीपुर की जेल में कैद हुआ और बाद में आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे। और थियोसॉफी और वो अरविंदो दोनों एक दूसरे की नजदीक की संस्था है और दोनों की विचारधारा एक दूसरे के नजदीक में है। अपना थियोसॉफी का कहीं कहीं सदस्य दोनों में जुड़े हुए हैं, जैसा कि रोहित मेहता वो दोनों संस्था से जुड़े हुए थे। हमारे गुजरात में स्वर्गस्थ जयेश भाई देसाई वो भी दोनों में जुड़े हुए थे। रंजन बेन वैद है वो भी दोनों में जुड़े हुए थे। तो ऐसा बनने की विचारधारा और वो समान। दूसरी बात जो सावित्री की किया गया वो बहुत अच्छा है। और गुजरात में तो बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, तो सावित्री का बहुत लेक्चर सीरीज चलाते हैं। लगभग 1000 ऊपर लेक्चर सीरीज हो गई। तो कहीं कहीं जगह पर 5 दिन 7 दिन का उसका ज्ञान सत्र रहता है, उसमें भी हो गया है बार बार। तो ये महान ग्रंथ है और उसकी बात रंजन में वैद्य ने बताया। और पुंडीचेरी और ऑरोविल सेंटर की बात बता रहा हूँ कि हमारा जो सदस्य अडियार के कन्वेंशन में जाता है तो लगभग सभी सदस्य पुंडीचेरी और ऑरोविल्लो में जाते ही हैं और निश्चित रूप से वहां से ज्ञान पाता है। ऑरोविल्लो अरविंदो सेंटर में जो अति मनस्वी चेतना का आह्वान किया है वो बड़ी उसकी वो महानता है महर्षि अरविंद की। और ऑरोविल्लो अरविंद सेंटर निश्चित रूप से हमको देखना और जानना पाने का मौका मिलना ही चाहिए। दुनिया के महान 3 दार्शनिक को हम माना जाता है, तो इसमें एक है महर्षि अरविंद, एक है जे कृष्णमूर्ति और एक है रजनीश, जिसने अपनी आदमी की मानसिक चेतना को ऊपर उठाने की बात किया बिना अपने कोई धर्म वगैरह से ऊपर उठ के मानव महान आभार और अभिवादन। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भाई। और कुछ कोई ऐड करना चाहता है? कैलाशबेन અને બાબુ કરીને કોઈ છે? हर्षवर्धन भाई तो છે જ, પણ शैलेंद्रनाथ दत्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। अर्चना मुंशी जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम हर्षवर्धन भाई को देंगे और उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। Sorry, I missed the earlier parts of Okay. the program. I was otherwise busy. Okay, sir. I think the program was very interesting, and I will try to listen in on the YouTube again. Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Yeah. Harshvardhan bhai, please go ahead. Namaskar. NANDKUMAR ji, I must congratulate you for selecting this particular day's topic. It is really wonderful that whatever you just told and everything you explained is really very remarkable regarding the knowledge which was imparted by Arvind Ghosh, and then after a certain period of time, that is just 1 century that has passed by, and still we are having this kind of transcendental knowledge, kind of perspective that is very individual. And the way that Rohit Mehta ji, who just came to Gujarat and for even incessantly for 15 years of time, he talked about Arvind's Savitri's Mahakavya, that is Epic of Savitri, and that was the series which really the people in Gujarat, the members of the Theosopher Society, even the persons connected with the high literary kind of work, they were highly interested and they got inspiration from those speeches of Rohitji. And now this is the time again for us to think over what Arvindji or Arvind Ghosh has partaken with the particular interest of our intuitive knowledge. So again, there are several books where we can find the references which are very important, and those references are really the gist of our theosophic literature too. So in this way, we have a kind of approach. This approach is really very full of insight and a kind of understanding. As a student of theosophy, we can go through the particular process of thinking
what Aurobindo Ghosh had realized during his imprisonment and what he had got the particular message from Lele. That is really wonderful. Seeing the thoughts coming to the mind from outside, from outer world, that is a remarkable thing. So one can experience in this way, and really it is a process, a kind of particular sadhana, and out of that we can understand so many things. We should not make our life obscure. We have to be very simple in our way. We have to be very cognitive in everything, and that consciousness itself that upholds and that becomes very, very live with the life force of our daily life. So we can live that particular life of a meditative mind and intuitive mind together. And out of that, one question was there with the reference of the theosophic understanding, mysticism, and as well as at the same time we have three aspects of our ism. That is the Sufism, that is also connected with mysticism. Again, we have the Bhakti, that is the devotional things. Also, it is connected with the same thing. And then we have the mind that goes beyond that. And so other people have given more references about this. Whatever the definitions we come across, they are okay. But understanding Aurobindo Ghosh literature, epic of Mahasavatri, and the journey of all those things which are delineated in this particular epic, that is wonderful. So remarkably, I must congratulate Ranjan man, you have spoken very nicely and you have that deep knowledge and understanding about Aurobindo, I know that. And you have gone through many of the chapters. Even I have read that particular book also. So I congratulate you. And Ramesh bhai, you spoke very well in Gujarati. You explained very nicely. Your voice was so stable and very comprehensive. So I must congratulate you. Okay, NANDKUMAR ji, again I congratulate you and I thank you very much. Congratulate करिए करो जी हर्षवर्धन जी, बाप रे, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, वो जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो तरल भाई ने किया है. Yes, yeah, that is what I just mean नहीं, to. पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों वक्ताओं ने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि एक्चुअली प्रदीप जी का ये आज का था, मुझे अचानक ऐसा समझ में आया कि सेम दिन आ रहा है 15 तारीख का, सेम दिन आ रहा है 5 दिसंबर, तो ये करना चाहिए. सबसे पहले मैंने रंजन जी से पूछा कि अगर आपको नंदकुमार जी लिख रहे हैं आप कर देंगे, उन्होंने हाँ बोली. फिर रमेश जी ने एकदम ताबड़तोड़ की. एक्चुअली क्या है, ये तीनों जो हमारे प्रतिभावान और आदरणीय वक्ता हैं, ये शायद अरविंदो घोष जी के अध्ययन, इनके जहन में अरविंदो बसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इतनी सहजता से किया जैसे वो स्वयं ही इसका वर्णन कर रहे हैं. बहुत बहुत आनंद आया और सुनने के बाद बार बार सुनने में यूट्यूब पे और अच्छा लगे. हाँ, अच्छा लगे. मेरे ख्याल से काफी लोग देखेंगे उसे. बहुत बहुत धन्यवाद. और कुछ कहना है रंजन बहन को? अगर मैं बोलूंगा तो अभी और 30 मिनट तक वो बोल सकती हैं बिना तैयारी. तो मुझे टाइम लिमिट. रंजन जी का आप कुछ नहीं कह रही अर्चना जी? कुछ कहें? किशोर बेन છે ને? हाँ हाँ, पर તમે કંઈક બોલો ને. मुझे एज अ कॉमन पर्सन, जब हम लोग खाली पता था अरविंद घोष और मदर के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, मेरी बुद्धि इतनी थी नहीं. मगर हम लोग पौंडीचेरी पहुंचे, हम कुछ चेन्नई शो के लिए गए थे और तरल और मैं शादी के बाद तुरंत गए. पता नहीं ऐसा लग रहा था कि पौंडीचेरी में जाओ ना तो जो वो मानव मंदिर है और वो जो उनकी जगह है, वहाँ इतनी परम शांति है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो आ चुके हैं. तो बड़ा अपना अपना सा लगता है. और पता नहीं कुछ एक अलग सी चीज थी कि हम देख भी रहे थे एक दूसरे को, मगर हम लोग एक साथ थे मगर भी साथ भी नहीं थे. We both were on an individual journey of experience which I have never ever experienced anywhere else. ऐसा लगता था जैसे कोई हमें आसपास प्यार से सहला रहा हो.
एकदम हाँ, है ना। या ना, एक तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो और अचानक आप बिल्कुल चुप हो जाओ, और कुछ अलग ही है वो। मैं शायद शब्द में बोल नहीं पाऊंगी, मगर बहुत अच्छा that is लगा। वही तो है, that is the magnetism of the place जी, involved in that यशवंत भाई प्लीज environment. गो अहेड। Yes, I guess. यशवंत भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू रंजन जी, नंद कुमार जी, उदय कुमार जी। यस गो अहेड सर। रमेश जी ऑफ कोर्स। अतुल भाई अनम्यूट करिए, आप शिथिल हो गए हैं। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશો અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન આપનું સ્વાગત. अभी नानी में स्वागत करूँ। बुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता इव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं